Abhi, you just spoke about your mother. I don't know whether Mrs. Hadiqa Kiani, by the way, ever told you that it was me जिसने पहली दफ़ा Hadiqa को मशवरा दिया था कि अपने बच्चों को म्यूज़िक स्कूल के अंदर डालो. तुम तो बहुत छोटी होती थी. You know, it must have been around 20-25 years. Since I've met your mother. How's she keeping? How's she doing? Lately, you know, like 7 months back, she had paralysis stroke. Oh. हाँ, तो वो इसीलिए मैं बता भी नहीं सकी ना, इतना अरसे से जो बिजी उसी चक्कर में. अब I don't know, God has His own ways of balancing things out, and that's a big disaster in my life. But at the same time, then अब नादे अली माशाल्लाह 11 months के हैं. तो when my baby was 4 months, then my mother had paralysis. So it's like a darkness and brightness at the same time going on in the house. So there is a balance. God always keeps a balance. Really, Hadiqa, that's a wonderful thought. तुमने अभी ब्राइटनेस की बात की, डार्कनेस की बात की, एंड यू स्पोक अबाउट बैलेंस. रियली आई विश कि हमारे देखने वाले इस बात को समझ सकें कि ज़िंदगी के अंदर जहाँ यू नो द अप्स एंड डाउन्स की साथ साथ चलते हैं, दे रन पैरेलल टू ईच अदर, एंड वन हैज़ टू होल्ड वन सेल्फ स्ट्रॉन्ग एंड बी एबल टू एंजॉय द अप्स एंड द डाउन्स ऑल्सो, बिकॉज देयर इज समथिंग टू लर्न फ्रॉम एवरीथिंग. Because if we, you know, we are part of the universe, and if we are not synced with the universe, then we are not synced with ourselves. And if we are not synced with ourselves, then obviously problems they happen in our lives. फिर जो disturbances आती हैं हमारी लाइफ में, उनका हमें खुद समझ नहीं आ रही होती कि वो क्यों आ रही हैं. वो इसीलिए आ रही होती हैं because we are in a state of denial most of the times, and we are not synced with whatever is happening around us. And I always, you know, when my mother had this paralysis stroke, I used to, you know, ask Allah, why did this thing happen? But you know, I just don't get the answer sometimes, because God is balancing things out. On one side there's Nade Ali, and I see his laughter, and you know, he giggles, and he's like the whole light in my house. And my mother, whenever you know, he laughs, she looks at him, and she just gets the brightness, and she gets the positive energies through him. So Allah Taala ने ऐसे टाइम पे बेटा मुझे दिया, ऐसे टाइम पे उस बेटे की लाइफ में मैं आई, that it's kind of a very different thing that I'm unable to, you know, figure this thing out. And my mother is, mashallah, she's a very strong-willed person, and she's keeping her wills, and she's keeping her strength, you know, intact. And she's trying to just keep herself in a positive road, and she's going through her physiotherapy. And आज मेरी लाइफ का बहुत ही, you can say that it's a very very emotional moment of my life, which I would really like to share with you, क्योंकि आप उनकी दोस्त भी हैं. और मैं चाहूँगी, क्योंकि 7 महीने से उनका एक पोइट्री का ब्लॉक लगा हुआ था, and you know that, you know, she's a beautiful lyricist and poetess. So she writes most of my songs. बल्कि अभी लाला का भी गाना उन्होंने खुद ही किया, इरफान का. तो वो भी लाला बहुत इमोशनल हो के अम्मी को एक गिफ्ट दिया इस टाइम पे ना, कि शी इज़ पैरालाइज्ड, सो यू नो शी इज़ गोना बी वेरी हैप्पी टू सी हर सन सिंगिंग. एंड सो आज उन्होंने उनका इमोशनल एक जो ब्लॉक लगा हुआ था ना पोइट्री का, विच आई थॉट दैट आई डोंट नो वेदर शी विल बी एबल टू डू द पोइट्री अगेन इन हर लाइफ और नॉट. सो शी डिड द पोइट्री, और मैं उसी तरीके से पेपर के ऊपर लिख के ले आई. मैंने कहा आज मैं जा रही हूँ तो मैं बेगम साहिबा को ये सुनवाऊँ और उनको बताऊंगी. और ये शायद खावर ने मेरी मोहब्बत में लिख दिया. देखो, वो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन तो होता ही है ना. और पता है, इट्स सच अ ब्यूटीफुल मोमेंट फॉर मी कि 7 महीने के बाद उनका एक इमोशनल वो जो ब्लॉकेज उनका था, वो that has opened up, and now she has started again, you know, with her poetry. So should I? Please. So I would like to share this thing with all the viewers here and the listeners who are just looking at the program. This is for the nation, for the country. ऐ मेरे देश की सौंधी मट्टी, ऐसी मट्टी है कहाँ. तेरे दरियाओं का है मीठा पानी, ऐसा पानी है कहाँ. चांदनी जैसे गुले तर पे शबनम, चांदनी जैसे गुले तर पे हो शबनम रक्सां, और तेरे दिन के उजाले सा उजाला है कहाँ. मेरी जान तुझ पे निछावर, मेरा सब तन मन धन, तू जो कायम है तो कायम है ये हस्ती मेरी, वरना तेरे सिवा दुनिया में रखा क्या है. इसको इस एंगल में भी लिया जा सकता. तेरी आज़ाद फ़ज़ाओं में हैं हम उड़ते पंछी, सांस लेते हैं फ़ज़ा में तेरी अमृत की तरह. वाह, बहुत. So I just brilliant, really brilliant. You must go and congratulate her from me.